acceleration, I'm just representing it by this symbol, acceleration average, and I'm putting a bar to denote that this is a vector quantity. Okay, A average. Now, इसका definition एक बार अच्छे से देख लो. So acceleration is defined as the rate at which velocity changes. More specifically, average acceleration is defined as change in velocity upon change in time. Remember, change in time just means time taken. Okay, so delta t was इसलिए लिखते हैं because imagine if I'm going from an instant where t is equal to 1 up to an instant where t is equal to 3. My stopwatch, when the motion started, my stopwatch was saying t is 1 second. When the motion ends, my stopwatch was saying t is 3 seconds. What is delta t in this case? What is delta t? 2 seconds. And delta t is also the time taken. Okay, so whenever you see delta t, imagine that means, understand that that means time taken. Us interval ka time taken. And how do we find interval ka time taken? If we are given instances, you subtract final minus initial. 3 minus 1 tells you ki 2 seconds is your time taken for that interval. Okay, so delta t jab bhi dekhoge, don't get scared, just understand that's time taken. All right, the numerator is more interesting. The numerator, delta v matlab final velocity minus initial velocity. इसमें interesting चीज क्या है? This is not an ordinary subtraction. This is a vector subtraction. This is where vectors come in. This is where you have to be careful. This is a vector subtraction. तो एक example अगर मैं दिखा देता हूँ. Alright, so imagine कि this is my initial velocity. ये क्या दिख रहा है? This is, let's say ये ऊपर से देख रहा है. So this is 1 meter per second towards south. This is my initial velocity. And let's say this is my final velocity, which is 3 meters per second towards west. 1 towards south is initial, 3 towards west is final. Average acceleration निकालते वक्त कोई भी ये नहीं करेगा. Please don't take 3 and 1 and subtract them and give your answer. Average acceleration is not 3 minus 1 by 2. And I hope you know why it is not 3 minus 1 by 2. यहाँ पे speed subtract नहीं करना है, magnitude subtract नहीं करना है, तुम्हें vector subtract करना है. You have to perform a proper vector subtraction, which is what we have learned in the beginning of this chapter. All right. So how do you perform that vector subtraction? So average acceleration is this vector. So what is my final vector? Final vector is 3. So average acceleration is the final vector, 3 towards west, minus the initial vector, 1 towards south, that divided by 2. That divided by 2. Okay. It's got a little clutter, but just try to follow. Now, 3 minus 1 downwards, how do we subtract? याद है subtract कैसे करते हैं? Minus 1 downwards को हम plus 1 upwards या minus 1 towards south को plus 1 in the opposite direction, plus 1 towards north लिख के add करेंगे. Okay, so we treat subtraction as addition. ये just minus sign से इसका direction को उल्टा करेंगे तो 1 north हो गया और फिर add कर लेंगे. अब add कर सकते हैं, ठीक है? तो add करना आता है. तो यहाँ पे जो भी मैंने, you see this kind of rough work that's over here, that's all, that's just basically me adding these terms. Okay, so how would I add them? I'm sure you know how to do that. यहाँ पे है ना, तो this 3 and 1 को हमने head to tail join किया. Head to tail join करने में कुछ तो resultant आ गया. Okay, resultant आ जाएगा root 3 square plus 1, that's root 10 आ जाएगा resultant. Okay, so we know कि our resultant has magnitude root 10 and angle निकल जाएगा tan inverse 1 by 3. So that's my numerator. My numerator is actually root 10 at an angle of tan inverse 1 by 3 with west. Okay, and divide that by time. So divide that by 2 and we have our answer. वापस समझाना है?
वापस समझाओ. अच्छा, one of you asked me to repeat this. कुछ specifically बता दो which कहाँ से starting से. कई example. Starting. देखो एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. सो यू हैव टू फाइंड डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. डेल्टा इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल. अब ये क्या है? ये ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन है. तो इफ आई गिव यू दिस एग्जांपल जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 1 टुवर्ड्स साउथ है और बाद में वो मुड़ के हो जाता है 3 टुवर्ड्स नॉर्थ, तब एवरेज एक्सेलरेशन निकालते वक्त न्यूमरेटर में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते वक्त प्लीज 3 - 1 मत करो. यू कांट सब्ट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड्स, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स. ये वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन है. that's what I'm stressing, vector subtraction. ऐसे 3 - 1 = 2 मत करो. okay, so vector subtraction. final vector draw करो, initial vector draw करो. you know how to subtract vectors. डिनोमिनेटर में टाइम टेकन है, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स, ये दिया है सवाल में. तो 2 को वैसे ही रखो, ठीक है, अंत तक. अब वो 3 - 1 को सिंप्लीफाई करो तो 1 नेगेटिव ऑफ 1 टुवर्ड्स साउथ इज पॉजिटिव 1 टुवर्ड्स नॉर्थ. यू कैन रिमूव द माइनस साइन एंड चेंज द डायरेक्शन. एंड नाउ जस्ट ऐड दीज गाइस, है ना, ऐड कर लो. यू नो योर लॉज, ट्रायंगल लॉ वगैरह ऐड कर लो. तो वही ऐड करने में 3 और 1 को ऐड करोगे तो आ जाएगा, इनफैक्ट देयर परपेंडिकुलर ना, तो पाइथागोरस से √10 आ जाएगा. एंगल भी आ जाएगा tan इनवर्स 1/3. ठीक है, आई एम श्योर यू नो हाउ टू ऐड देम. तो ऐसा √10 tan इनवर्स 1/3 एंगल विद वेस्ट, इसको बोलते हैं tan इनवर्स 1/3 नॉर्थ ऑफ वेस्ट. वैसा एंगल, वैसा डायरेक्शन आ जाएगा. दैट इज आवर न्यूमरेटर, √10 along that direction. उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे तो √10/2 हो जाएगा. गॉट इट? आ गया, जिस्ट आ गया. मतलब बेसिकली आई एम जस्ट टेलिंग यू परफॉर्म अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डोंट परफॉर्म एन ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ आई गिव यू गाइस अ क्वेश्चन टू सॉल्व. बट इज दैट क्लियर? क्या नहीं करना है? ये नंबर्स को ब्लाइंडली सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो क्लियर है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है और आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन. वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब इसको मुंह उल्टा कर लो और ऐड कर लो. आता है ना वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ से. ओके, क्लियर? हु आस्क्ड मी, डिड यू गेट इट, या स्टिल इज देयर सम डाउट? लेट मी नो quickly. Okay, anyone still writing? जल्दी कर लो. Quick. And please try to write while I'm teaching. Okay? थोड़ा सुन भी लो, थोड़ा देख देख के लिख भी लो. Done? Okay. All right. So just try to conceal this. So your question now is, a car goes north at a speed of 4 meters per second for 2 seconds. Sorry, a car goes north at a speed of 4 meters per second for 2 seconds. Then it turns towards its right and goes at a speed of 2 meters per second for 3 seconds. Okay, that's what's given. You have to now understand what is going on. North जा रहा है 4 के स्पीड से 2 सेकंड के लिए, फिर राइट मुड़ता है और 2 के स्पीड से जा रहा है 3 सेकंड के लिए.
Simple सी बात है. Try to figure out first of all what has the car done. If you can draw out किधर गया, कितना गया, फिर मुड़ के किधर गया, कितना गया. Try to figure that out, because then based on that you need to find the distance covered. You need to also find the displacement. You need to also find the average speed and the average velocity. ये चार तो easily होना चाहिए. And then also please try to find the average acceleration. Come on, Judy. Yes, Ishan, very nice. Very nice, Ishan. Yes, Arushi सही है, स्मृति रूपा सही है, वरुण सही है. भव्या सही है, वरुण सही है. अलावा सही है, ईशान सही है. Yes. Girish, just check that. Bhavya, perfect. Yes. In fact, guys, all those who are answering this placement, also make sure you can express the direction. Direction भी important है. वरुण सही है, ईशान सही है. Everyone's correct फिलहाल. Only distance 8/3, that's wrong, but baki every other answer is correct. Correct. If you hear me say correct, just imagine I'm saying it for you. Correct. थोड़ा direction भी निकाल दो. So and so north of east, yeah. So and so east of north. Yes, very nice. भव्या, हाँ सही है. Good. कायनात सही है. वेदिका सही है. अलाइवा सही है. अंशुमन सही है. Yes, Ishan, good. Right, guys, those who haven't yet gotten what to do. अंशुमन सही है, but थोड़ा angle भी दे दे. Yeah, for the rest who haven't gotten what to do, just try to draw what's going on. Draw this, come on. गाड़ी 4 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड के लिए नॉर्थ जा रहा है. देखो ना फिर वो कितना हो गया, कितना गया नॉर्थ. फिर राइट की तरफ मुड़ा. ट्राई टू फिगर आउट राइट की तरफ मुड़ना ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया. और फिर देखो और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 3 सेकेंड गया, मतलब किधर गया. ओके. Alright, let me just, some of you have reached the 5th one as well. Let me just cross check that. एक मिनट ना. 5th वाला. Very nice. So you should, yeah, you should get
वरुण सही है, भव्या सही है, कैनाथ सही है. Very nice. Yes, your angles also seem correct. Okay, I think just cross check the first four. Okay, you can cross check the first four. Let's see what's going on. Let's see क्या चल रहा है. What happened? All right. So, if you don't want to see the thing on the side, don't see the thing on the side. The thing on the side is the answer to the fifth one. But at least first four में क्या हो रहा है? यार, we are told कि a vehicle is going north with a speed of 4 meters per second for 2 seconds. Distance is speed into time. 4 की speed से 2 second के लिए अगर जाएगा, अब देख लो, I think है ना, cross check सही है क्या नहीं. 2 सेकंड के लिए अगर 4 की स्पीड से जाएगा तो 8 मीटर कवर करेगा ना. 2 into 4, 4 मीटर पर सेकेंड. सो इन 2 seconds it covers 8 meters. अब वो राइट की तरफ मुड़ता है. तो while going towards the north, if I turn towards the right, I'm going to turn towards east. Okay, it will be the opposite when I go towards south. But going towards north, if I turn towards the right, I'll turn towards east. अब east की तरफ मुड़ के he goes at a speed of 2 meters per second for 3 seconds. कितना हो गया distance? 2 meters per second for 3 seconds. That becomes 6 meters. So this is the motion. That's the motion of the vehicle. 8 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर ईस्ट. बहुत इजी है यार. डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो जाता है लेंथ ऑफ द पाथ. डिस्टेंस हो जाता है 8 + 6, 14 meters इज डिस्टेंस. टाइम कितना हो गया टोटल? तो टाइम भी लिखा है. टाइम इज, पहले वो 2 सेकंड के लिए नॉर्थ गया, 3 सेकंड के लिए ईस्ट गया, है ना. सो नेचुरली आई मीन वी जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, द पोर्शन डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन, उसी को हम अपना टाइम लेंगे. तो 2 सेकंड नॉर्थ गया, 3 सेकंड ईस्ट गया. The time is 5 seconds. Distance is 8 + 6, 14 meters. Think and see what went wrong. Okay, इतना ही करना था. Displacement. Displacement is the vector going from start to finish. So it's going to be the hypotenuse of this triangle. The displacement is going to be √8² + 6², which is 10. है ना? So displacement is 10 meters. How do I describe the direction? So you can see कि this is a standard 3-5-4 वाला triangle. 3 के opposite छोटा, 6 के opposite छोटा angle, 8 के opposite बड़ा वाला angle. तो 6 के opposite 37 degrees होगा. And how do we describe this? North से, हाँ, I'm explaining the second one. Okay, displacement तो पहले तो यहाँ से यहाँ है ना, start से finish. तो this length अगर 8 and 6 दिख रहा है तो this is the hypotenuse. 8 and 6 का hypotenuse देखो कितना आता है, 10 आएगा. वो स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया. ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट हो गया. तो 8 and 6 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, you'll get 10. Okay, now once you get 10, this is the direction of your displacement. How do I define this direction? ये नॉर्थ से जब तुम ईस्ट की तरफ घूमोगे, 37 डिग्रीज जब घूमोगे तब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. कैसे आया 37? ये अपना, you remember we went over the triangles. We went over the 3 4 5 triangle and we said 3 4 5 के एंगल्स होते हैं 37 डिग्रीज, 53 डिग्रीज, याद है? हाँ, उसी से किया है. और मैंने क्या बोला? सिंपल ट्रिक ये है कि यार छोटा साइड के ऑपोजिट छोटा एंगल होगा. तो ये जो 6 है दैट स्मॉलर, उसके ऑपोजिट 37 है. 8 के ऑपोजिट फिर बड़ा वाला होगा 53. There's so many ways you can cross check. Tan 37 is 6/8, 3/4 दिख रहा है अच्छे से. या sin 37 is 6/10, 3/5 दिख रहा है ना. तो वहां से we know for sure that angle is 37. And how do we describe the direction? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्रीज घूमो तो ये डायरेक्शन होता है. So this direction is 37 degrees east of north. 37 degrees east of north. Got it? Clear till point number 2? Those who have got this, continue attempting question number 5. Okay, by the time I reach 5, I think I'll just explain that.
Okay, so distance done, displacement done. If those two are done, average speed and average velocity should also not take time, because average speed is defined as distance, total distance by total time taken. All right, so average speed is total distance by total time taken. Total distance is 14. Total time taken is 5. 14 by 5, that is your average speed. Plus 14 by 5. Khatam. 2.8 meters per second, that is your average speed. Same story for displacement. Same story for average velocity. Average velocity is displacement by time. अब displacement is पूरा लिखा नहीं है, but displacement is this vector. उस वेक्टर को तुम यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा है, but the entire वेक्टर को जब तुम टाइम से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा. 10 को 5 से डिवाइड कर लो, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, बट डायरेक्शन वही रह गया जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा. एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग योर डिस्प्लेसमेंट. एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज हैज द सेम डायरेक्शन एज योर डिस्प्लेसमेंट. उसका बस मैग्नीट्यूड अलग होता है. मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो 10/5 2. सिंपल थे फर्स्ट 4. 5 is time. The formula is distance by time, displacement by time. 5 is our time. Got it? पहले 2 सेकंड के लिए नॉर्थ गया, फिर 3 सेकंड के लिए ईस्ट गया. So 5 is the time. Okay. For those who have struggled with this after class, just go over it once more. Solve it once more on your own, and then you'll get the confidence, because this will be a nice revision of all those definitions we just saw. And this covers every single definition. ये लास्ट वाला आया नहीं है तो कोई बात. सम ऑफ यू गॉट इट वेरी नाइस. जिनका आया नहीं है ठीक है, सीख लो, एंड देन मे बी ट्राई दिस अगेन एट होम, that definition will go be clear in your head. अब एवरेज एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सा चीज है. एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. अब टाइम मुझे पता है, तो लेट मी नॉट वरी अबाउट टाइम फॉर सम टाइम. ठीक है, लेट्स वरी अबाउट चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? ये है फाइनल वेलोसिटी. याद है सवाल बोल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा था वो, तो ये है फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल क्या है? वो 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो वो है इनिशियल वेलोसिटी. फाइनली 2 से ईस्ट की तरफ जा रहा है, इनिशियली 4 से नॉर्थ की तरफ जा रहा है. ये फाइनल और इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है. दैट इज माय न्यूमरेटर इन एवरेज एक्सेलरेशन. सब्ट्रैक्ट करके प्लीज 2 - 4 - 2 मत बोल दो. कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? वेक्टोरली सब्ट्रैक्ट करना है. 2 towards east minus 4 towards north. I think it's color coded, so don't get lost. Okay? So this, तो next green line क्या ये? हाँ, तो 2 towards east. अब -4 towards north को क्या बोलेंगे? +4 towards south. -4 towards north is +4 towards south. है ना? Now you can add these. How will we add these vectors? So draw them. 2 towards east draw किया मैंने, 4 towards south draw किया. इनका रिजल्टेंट, तो ये ट्राइंगल लॉ हो गया, तो इनका रिजल्टेंट will give me delta V. इनका रिजल्टेंट will give me delta V. इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. √2² + 4² √4 + 16 √20 आ जाता है. That is delta V. Simple. √20. Okay. √20 को लिखने के और तरीके हैं. √20 is √4 × 5, एंड √4 को बाहर लेके जा सकते हो तो 2√5 हो जाएगा. ये एक ही बात है. √20 × √5. Okay. Now that is delta V. You can figure out the direction as well. अगर डायरेक्शन चाहिए तो यू कैन फिगर आउट द डायरेक्शन एज वेल. कैसे डायरेक्शन? जैसे मैं बस ये रैंडमली ये एंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ, थीटा को हाईलाइट कर रहा हूँ. अब ये एंगल का टैन मुझे साफ साफ दिख रहा है. मुझे दिख रहा है टैन थीटा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो टैन थीटा इज 4/2, यानी कि टैन थीटा इज 2. एंड यू नो इफ टैन थीटा इज 2, आई कैन से दैट थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ 2.
तो ये हो गया एंगल। अब सब कुछ तैयार है। अब मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा? सॉरी, जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द स्नीज। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ये जो डेल्टा वी था अपना न्यूमरेटर, डेल्टा वी बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन इधर ही लिखा है 5, तो डेल्टा वी बाई टाइम को डिवाइड करूंगा। 2√5/5 जब डिवाइड करोगे, √5 और 5 का √5 कटेगा, तो एक एक्स्ट्रा √5 नीचे रह जाएगा। सो यू हैव 2/√5 meters per second square. That is your average acceleration. And if you want the direction, you can say the direction is so and so angle, tan inverse 2 angle, ईस्ट से साउथ की तरफ मुड़ो। so and so angle south of east, so and so angle below east, so and so angle south of east. That is your direction. Clear hai? All those who could not get all 5, please attempt this again at home on your own, and you'll be able to do it, and then you'll get some confidence as well. But samajh mein aa gaya? Are the definitions clear in your head? Yeah, I'll explain how did I find theta. Sure. थीटा देखो सिंपल, मैंने बस थीटा ऐसा लेबल किया, और दूसरा देखो ना, ये आसपास जो साइड्स हैं, you look at the sides, pick your favorite sides. For me 4 and 2 are good numbers, so I'm picking them, है ना। √20 थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, तो 4 and 2 उठाया। देखो 4 and 2 के बीच में रिलेशन क्या है, पूरा 5 एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जल्दी से देख लो, 5 वापस जल्दी बता रहा हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाई टी। Delta V means final velocity minus initial velocity. Final velocity is 2 towards east. Initial velocity is 4 towards north. Okay, है ना, according to the question. उनको subtract करो। subtract कैसे करते हो? subtract करते वक्त second term को उल्टा करके add कर लो। तो देखो उल्टा करके add कर रहा हूँ। फिर मैंने draw किया 2 towards right, 4 towards south. Sorry, excuse me. 2 towards east, 4 towards south. हेड टू टेल ज्वाइन करके ड्रॉ किया। उनका रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ से ये पिंक वेक्टर आ रहा है। पिंक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से √20 आ रहा है, जिसको 2√5 भी लिख सकते हैं। अगर 4 बार निकाल दो तो 2√5 भी लिख सकते हैं। ये है अपना डेल्टा वी, दिस इज माय न्यूमरेटर। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाय टाइम। टाइम इज 5, 2√5/5, that is my average acceleration, this is my magnitude. The most important thing, ये निकालना चाहिए। फिर अगर सवाल डायरेक्शन पूछ रहा है तो वो भी बता सकता है। कैसे डायरेक्शन बताएंगे? ये एंगल मैंने उठाया थीटा, tan थीटा यूज कर रहा हूँ क्योंकि आई कैन सी दीज नंबर्स आर गुड, I like them a little bit more than √20, so I can say tan theta. Why am I using tan? Because this is the opposite, this is the adjacent, and a function which involves opposite and adjacent is tan. So tan theta is 4/2. Therefore, tan theta is 2. If tan theta equal to 2, theta is equal to tan inverse 2. Got it? तो ये आ गया एंगल। और फिर इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे? दिस इज लाइक बिलो द हॉरिजॉन्टल। बिलो की जगह साउथ ऑफ हॉरिजॉन्टल की जगह ईस्ट बोल दो। So instead of saying below horizontal, say south of east. So it's so and so angle south of east. Is tan inverse 2 south of east. Got it? Clear है? Okay. एक बार खुद से कर लो, फिर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है? Can I move on? Okay. All right. So we'll of course visit these terms again in kinematics. ये बस एक brief introduction था थोड़ा vector practice के लिए, because a lot of your questions in your booklet involve these kinematics terms. Okay, so this is just for practice. Now I would say in your notes, leave some space because we went over these slides. Just leave some space. In the last week's doubt session, I taught you these lines, you know, how to decide when vectors are parallel, when vectors are
anti-parallel, when they're given an I cap, J cap, K cap. So just leave some space and write copy pages 30, 30.5 and 31. They are in the drive. Okay. So kinematics is another chapter. जो अगर तुम्हें अपना planner देखा होगा, vectors and calculus के बाद, vectors calculus तो maths का part है technically. फिर physics starts with kinematics. Kinematics has quantities like velocity, acceleration, and so on. It deals with motion of a particle. Without going into why a particle moves, without going into force, just dealing with the motion, कैसा move करता है, कितना तेजी से move करता है, वगैरह वगैरह. So velocity, acceleration, all the terms that I defined, those and a few more make up kinematics. Okay, so just leave some space for 30, 30.5, 31. Just write copy from here because I have taught you these lines in the previous class where we discussed at length कैसे parallel, anti-parallel का मतलब क्या है. So just copy those lines. ठीक है? Leave some space for that. Okay, and after that we are going to start with multiplication of vectors. That's our next topic. We are finally going to start multiplication of vectors. Very simple, very interesting. The first one is especially easy. Yes, somebody is saying, is there a term called as instantaneous velocity? That's for your calculus teacher to teach you. That comes under the realm of calculus. Okay, so you can ask that. Kabhi NCERT padhte waqt you might have seen terms like instantaneous velocity, instantaneous acceleration. Okay, the explanation of that requires the help of calculus. So just most probably he may teach you it during calculus itself. Probably, yeah, towards the end of calculus he may teach you that. So you can just check with him when he plans to teach that. 30, 30.5, 31 क्या था? ये था यार, ये यार है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया. सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर b is k times a, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वेक्टर b is minus k times a. Towards the end of class I'll show you again where it is in the drive. Just लिखो copy 30, 30.5 and 31 from vectors part 2. Okay, याद आ रहा है ना ये किया, डिस्कस किया तुम्हारे साथ. I taught it, you just have to copy it. I don't want to waste lecture time, but you can just copy it after class. Cool, ready to start multiplication of vectors? All right, so there are two types of multiplication between vectors. Remember, this is maths, so don't get into why and how and all that. This is, we are defining this way. Maths is a tool which is developed to support real world observations. है ना, 2 + 3 = 5 ऐसा develop किया to support real world observations. वैसे ही dot product, cross product, these are tools which have been defined and developed to support real world observations. There are physical quantities which interact this way. Okay, so right now you don't need to say अरे why dot product का ऐसा formula है, ये सब define किया गया है ऐसा. It's like I'm teaching you a word and you're teaching photosynthesis and I'm teaching you the meaning of the word वैसे ही. Yeah, so we're gonna there's ज़्यादा why नहीं है इसमें, but we'll understand what it is and how to use it and stuff like that. So there are two types of multiplication. One is dot product और scalar product. इसका नाम है, ठीक है, नाम देख लो, dot product और scalar product. They are one and the same. Those are okay. So scalar product does not mean multiplying vector with a scalar. Scalar product is a specific name for multiplication between two vectors. Okay, it's an alternative name for something called as dot product, जो आज देखेंगे. The one we'll see after this, yes, Girish, and the one that we'll see after this is cross product, here vector product. Okay, now
इसमें क्या है, these symbols make no sense. ये ध्यान दो, which symbols make no sense? Any of these symbols, because if you see these symbols here, I'm telling you, क्या इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे बस इतना समझ में आ रहा है कि a बार और b बार को मल्टीप्लाई करना है, बट इससे ये समझ में नहीं आ रहा किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करना है ना? दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है, दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है. यू विल वेरी सून सी कि the symbols for dot product is this and the symbol for cross product is this. So because there are two different multiplications, we have to specify किस टाइप का multiplication intended है. So we'll always have to put a dot or cross. If you don't put a dot or cross, the multiplication makes no sense. Is that clear? So this symbol makes no sense. ऐसे ही bracket डालना but dot और cross लिखने नहीं लिखना मतलब makes no sense. ऐसा लिखना makes no sense. कई बार ऐसे ही सवाल आता है, you'll see in your booklet as well sometimes. Which of the following symbols make sense? ऐसा सवाल आता है. So please remember, these make absolutely no sense. Why? The type of multiplication is not defined. Similarly, do you think this makes sense? Square of a vector, should it make sense? A bar का square. Because सबको पता है कि square मतलब खुद के साथ multiply करना, but खुद के साथ कैसे multiply करना? कुछ dot product करना खुद के साथ या खुद के साथ cross product करना? We don't know, right? Therefore, that symbol also makes no sense. Are you guys following what I'm trying to say? Yeah. Okay, good. And the last thing that you should remember is, even before we get into multiplication, division of vectors is just not defined. Okay, that's good for you. You can celebrate. Division aane nahi wala hai isme. Division of vectors is not defined. Firstly, we never find the need to do it. कभी जरूरत पड़ता नहीं है ये define करने का. ठीक है, multiplication से काम हो जाता है. And more importantly, just for reasons you'll understand a lot later, you'll see that division of vectors actually makes no sense and therefore is not. You don't get a unique answer. Okay, so A bar by B bar is just not defined. ऐसे याद कर लो. Vector division is not defined. Yes, vectors cannot be squared. Square of a vector makes no sense. Vector can be multiplied with itself. वो deny नहीं कर रहा हूँ. I'm just saying, किसने बोला vector का square निकालो? You have the right to say that makes no sense. Because square means multiplication with itself. The person needs to specify किस type of multiplication. As long as the multiplication is not specified, it makes no sense. Okay. So yeah, just by itself, square of vector A makes no sense. Okay, let me know when you're done writing. तो डिविजन डिफाइन नहीं है और ऐसे ही कुछ वेक्टर्स को लिखना आपस में, मतलब एक के बाजू एक, and not giving any symbol but expecting multiplication, that makes no sense. Cool. Yes, Rajasi, of course. Physics, every chapter in physics will of course include numericals. Will predominantly include numericals. थियोरी क्वेश्चन नहीं आता ज्यादा, फिर भी नीट के एग्जाम में आ जाता है. But yeah, I mean, solving is key. All right. I hope you guys were done with that. Let me know if you were not done. All right, the dot product, yeah, scalar product. We're going to visit the first type of multiplication. Iska statement dekh lo. All right, so the dot product of two vectors A bar and B bar is, pehle to symbol kya hai, is represented by the symbol as you just saw, A bar dot
B bar. So that's where the name dot comes from. A bar dot B bar. Okay. And what is this quantity? It is a scalar quantity. It gives us a scalar. We have defined it this way. It's not Jadu. We have defined. कि dot product करोगे, the result is going to be a particular scalar. ऐसे define किया है because things in the real world behave this way. So it gives us a scalar quantity. That is where this name comes from. Okay, so scalar product does not mean one of the terms is a scalar. It's the multiplication of two vectors only, but the result you get is a scalar. Hence the name scalar product. So the dot product of two vectors A bar and B bar is represented by the symbol A bar dot B bar. It gives us a scalar quantity. अब scalar quantity के बारे में क्या जानना है? सिर्फ magnitude direction होता नहीं है. तो क्या है इस quantity का magnitude? It gives us a scalar quantity having magnitude equal to AB cos theta. That is the magnitude. So suddenly we know everything about this dot product. ये dot product का result कितना होगा? एक scalar होगा और उस scalar का magnitude कितना होगा? AB cos theta होगा. मतलब वो scalar ही कितना होगा? AB cos theta होगा. Simple. A क्या है? Notice this. I mean, you should see these subtle changes and not get confused. A is not the vector anymore. A is the magnitude of the vector. B is not a vector anymore. It's again the magnitude of B bar. So A is a number, positive number. B is a positive number. What is cos theta? So theta is actually the angle between the vectors, the way we have studied in the past. Well, theta is the angle between the vectors when the tails are joined. So cos theta, angle between vectors क्या हो सकता है? 0 से 180 हो सकता है ना? And 0 से 180 का cos क्या होगा? Acute के लिए positive, obtuse के लिए negative. So cos theta can be any number between -1 and 1. So it could be positive, it could be negative. But at the end of the day, these are three numbers. Inka product also will be a number, either positive or negative, or even 0. It will be a number. Okay, this is the definition. Any doubts in the definition? Cool. तो एक बार लिख के हो गया सब लोग फिर बता दो. And this is very easy. ठीक है, dot product is super easy. Orally कर लोगे. I can guarantee you that you can do these dot product questions orally. Okay. Okay, थोड़ा examples दिखा रहा हूँ. Of course, I'll give you questions to solve, but I'm just giving you a few examples. You can keep writing alongside me. So यहाँ पे one example I took was when the vectors, so the representation is shown as multiplication of vectors, but the answer is a scalar. Absolutely. This entire thing is the multiplication of two vector quantities. It is two vectors combining, but it is a combination which gives us a scalar. Like you'll see later on, the many such physical quantities. Force and displacement are two quantities which seem to combine to give us work, but force and displacement were vectors and work is a scalar. So for quantities like that, there are many more such quantities. For quantities like them, like those, you have dot product defined this way. Okay? तो जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किया है. There's vector A bar and there's vector B bar. A bar is vector of magnitude 3, B bar is a vector of magnitude 4. The angle between them is, let's say, 60 degrees. Acute angle है, acute angle है. तो अभी dot product कितना होगा? Okay, so you can also do this, but what is the formula? The formula is magnitude of A, magnitude of B cos theta. I'm deliberately not writing this.
ये तो लिखोगे है ना, ये तो मतलब इसमें साफ साफ दिखता है mod a bar mod b bar. I want you to get used to seeing a and realizing a is not the vector but a is the magnitude. ये थोड़ा और subtle symbol है, इसका थोड़ा आदत है ना. This is something we miss. So I'm just trying to develop that habit for you guys. a देख लिया, समझ में आना चाहिए, वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है. तो a का मैग्नीट्यूड है 3, b का मैग्नीट्यूड है 4, cos 60 is half. So 3 into 4 into half, that's going to give us 6. The dot product is going to be 6. Fair enough. Okay. Vectors को अगर मैंने ऐसा रखा, I keep the angle between them as 120. Same magnitude for A bar, same magnitude for B bar. तो इसमें अगर तुम cos 120 निकालने जाओगे तो you know this, right? Cos 120, cos of an obtuse angle is negative of cos 180. So cos theta is negative of cos 180 minus theta. So this is negative of cos 60. Cos of the supplementary angles are negative. Okay? Cos 120 is negative cos 60, is negative half. Cos in the second quadrant is negative. Cos 120 is negative half. Clear? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट? A dot B is A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, cos 120. Cos 120 is minus half. So 12 into minus half minus 6. So over here I'm just demonstrating through two examples how this dot product between two visible vector quantities is giving us a number. The number could be positive, the number could be negative. Six आ रहा है, minus 6 आ रहा है, could be positive, could be negative. Could be 0 as well. When would this be 0? When would the dot product be 0? Yes, very nice. सब इसका खेल है. ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा. खेल है cos theta का. Cos theta 0 होगा when theta is 90. So when the vectors are perpendicular, it could be 0 as well. You don't need to note that down. I have put them in points थोड़ा आगे properties में. But yeah, I mean, just think of that and see how when they are perpendicular dot product indeed 0 आएगा. Done with this page. कोई wait बोल रहा है? Should I move on? कोई भी वेट नहीं बोल रहा है. ओके, कूल. तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट पे आ जाते हैं. ओके, a bunch of properties we'll see and we'll understand dot product through this, and then we'll see its applications. So first and foremost, properties of dot product. You can start writing. The first one is very simple. We've seen this. It gives us a scalar quantity. Dot product always gives a scalar quantity. The second property is it is what we call as commutative. So commutative is a mathematical term which means कि when we say a particular operation is commutative, it means तुम operation का order अगर उल्टा करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे what does commutative actually mean? It means कि A dot B के जगह अगर तुम B dot A लिखोगे, order reverse करोगे, तो भी it's going to be the same. Nothing is going to change. That's the meaning of commutative. Okay, so any other another operation which is commutative is addition. Order matter नहीं करता है ना? Addition में भी matter नहीं करता है. Yes, Kirish, yes. Okay, so any operation where the order does not matter, that operation is called commutative. So dot product is commutative. And why? यहाँ पे simply proof दिख रहा है. A dot B is A into B cos theta. B dot A will be B into A cos theta. एक ही बात होगा. At the end of the day, it's a multiplication of three numbers. You write it as A into B cos theta or B into A cos theta, it makes no difference. It's the same three numbers. So A dot B and B dot A are one and the same. The third property is dot product is distributive over addition. Now, what does this term mean? तो लगता है ऐसा कुछ तो बड़ा सा गंदा सा, but this just means जैसे तुम स्कूल में ब्रैकेट खोलते हैं ना,
वैसे ही यहाँ पे भी ब्रैकेट खोलना है. जो तुम स्कूल में ब्रैकेट खोलते थे, दैट वाज मल्टीप्लिकेशन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. मतलब इसका मतलब क्या है? At the end of the day, just remember what you can do. If you have a situation like this, you can open the brackets the way you would in school. You would multiply this with this with this, है ना? A with C, A with D, B with C, B with D, वैसे ही करना है. But किस टाइप का multiplication? Dot product. तो इसको जब खोलोगे, you will get A dot C, या A bar plus A bar dot B bar plus B bar dot C bar plus B bar dot D bar. And you could write it in any order. It doesn't make a difference. You could write it as C dot A as well. Yes, it basically just means you can open the brackets. इधर minus sign भी हो सकता था. Minus sign अगर होगा तो जैसे स्कूल में ब्रैकेट खोलते हो वैसे ही खोलो. अगर माइनस साइन होता तो क्या आंसर होता? तो A bar dot C bar and then A bar dot minus D bar के लिए इधर माइनस साइन आना पड़ेगा. तो this entire term will be negative. फिर B bar dot C bar normal रहेगा and B bar dot D bar के लिए फिर से एक माइनस साइन आना पड़ेगा. क्वाइट लॉजिकली, जैसे तुम स्कूल में जैसे अलजेब्रा है ना, स्केलर अलजेब्रा में जैसे ब्रैकेट खोलते हो वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं. नो सरप्राइजेस एंड नो tricks to here. Same thing. Those are the first 3 points. लिख लो. Done. Okay. Nobody's saying wait. All right. Okay. Point number 4. Okay, so scalars can be taken out of the dot product. Scalars can be taken out of the dot product. बहुत सिंपल सा पॉइंट है. यहाँ पे एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे इफ आई हैव B का डॉट प्रोडक्ट with some number into A bar, so all I am saying is I can take the number outside. I can first take the dot product of A and B, then I can multiply the number. Similarly, if I have that number into B bar का dot product with A bar, I can do the same thing. जिधर भी number है, B के साथ 2 है या B के साथ माइनस साइन है, जो भी हो, सारे नंबर्स को ऐसा कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट के बाहर ले सकते हो. पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो, फिर नंबर मल्टीप्लाई कर लो. Why? Because whichever way you write this, at the end of the day, it's going to be KAB cos theta. Think of that. The middle term is clearly K into AB cos theta. This term is going to be KA into B into cos theta. एक ही बात हो रहा है. This is going to be A into KB into cos. तो एक ही बात हो रहा है ना? So you can always, if you have a number, you can always take it outside the dot product. Okay, जैसे which was actually what was happening when one of you asked me on the previous page, है ना? अगर माइनस साइन रहा तो क्या होगा? तो B डॉट माइनस D बार को क्या करेंगे? माइनस साइन बार ले लो, ऐसा कर सकते हो. This was your question, right? Like, what if one of them has a minus sign? So as I go to multiply B with minus D, if I go to multiply B with minus D, yeah, K is a scalar. K is a scalar. If you go to multiply B with minus D, you can remove the minus sign. हाँ, ज़्यादा यूज कुछ नहीं है. Just know कि you can do this. ज़्यादा यूज की बात नहीं है. Just know that you can do this. मतलब just know that they are one and the same. These are just properties. Okay.
So that's the fourth point. Clear hai na? K is a scalar. I'm just saying if there's some number being multiplied with a bar, you can take the number out and multiply later with the dot product. Okay. You may do it in some place. So just know that you can do this. Point number 5. Dot product of parallel vectors is the product of their magnitudes. Why? Dot product of parallel vectors A and B. इस केस में dot product A dot B हो जाएगा A into B into cos of the angle between them. But the cos of the angle between parallel vectors is 0 and cos 0 is 1. Very nice. Because cos 0 is 1, dot product कितना हो रहा है? Simply A into B हो रहा है. Product magnitude of A into magnitude of B हो रहा है. So the dot product of two parallel vectors is the product of their magnitudes. Is A into B. थोड़ा stress करके mod A bar mod B bar लेकर. It's basically A into B. Okay. तो ऐसे जल्दी से हर केस देखेंगे. ये पैरेलल का हो गया. Please explain the fifth point once more. हाँ, fifth point क्या है? Parallel vectors के बीच में angle 0 होता है. तो उनका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा. थीटा इज 0 and cos 0 is 1. So cos 0 is 1, that disappears. I am left with this a into b. उसी को एक अलग तरीके से लिखा है mod a bar mod b bar. थोड़ा स्ट्रेस करके लिखा है. एक ही बात है ना. प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a and the magnitude of b. मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट. पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है बस मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट. Because cos 0 is 1. Clear है? Yes, Ishan, yes. Alright, so some of you can start thinking in advance of the other cases. अच्छा, 4. 4 is एक last time बता देता हूँ. It's not a point of lot of consequence, but 4 का example दे देता हूँ. जिससे अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिया है ना, मैं बस इतना बता रहा हूँ. If you see 2 into a bar dot b bar, I am saying you can take the 2 outside the dot product. 2 को डॉट प्रोडक्ट के बाहर लेके जा सकते हो. यू कैन डू इट दिस वे. पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो, फिर वो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. गॉट इट? दैट्स द आइडिया. बिकॉज whichever way you look at it, this is going to be 2ab cos theta. कैसे भी देख लो है ना, this will be 2ab cos theta only. So you can just take the numbers outside the dot product. That's just for your information. Yes, Girish. Yes. So shall I go to the next point? Yeah. Dot product of opposite vectors. Yeah, anti-parallel vectors. Okay. Dot product of opposite vectors or anti-parallel vectors will be what? So anti-parallel vectors के बीच में 180 degree angle होता है. So the dot product is going to be AB cos 180. But we know cos of supplementary angles are negative. So cos 180 is negative of cos 0. Cos 0 is 1. So cos 180 is minus 1. So this becomes minus 1 into AB. या opposite vectors का dot product हो जाएगा minus AB. Parallel है तो positive AB, negative और anti parallel है तो negative AB. समझ में आया? And then what I can also say is I can say the dot product of two vectors will lie between these extremes. 6 वापस समझा देता हूँ. हाँ तो देखो वापस यार, अगर एंटी पैरेलल है तो एंगल उनके बीच में 180 है. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ ना, ए बी कॉस थीटा. इफ थीटा इज 180, cos 180 degrees is -1. Right? I think this you learned this in the other track as well.
cos 180 is negative of cos 0. cos 0 is 1, तो cos 180 is -1. देखो इधर -1 डालोगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी हो जाएगा. So parallel vectors का dot product was a into b. Anti-parallel vectors का dot product is minus a into b. Got it? So if I have vectors of magnitude 2 and 3 and they are parallel, their dot product will be 6. They are anti-parallel, the dot product will be -6. Okay, got it? Moreover, डॉट प्रोडक्ट का एक्सट्रीम वैल्यू समझ लो क्या होगा. तो डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट है ए बी कॉस थीटा. ओके, नाउ व्हाट इज दिस कॉस थीटा? आई होप एवरीवन नोस कॉस थीटा लाइज बिटवीन these extremes. Yes, because theta goes from 0 to 180. Cos theta is going to be positive for acute angles, negative for obtuse angles. We just saw that. And therefore cos theta will can take every value between -1 and 1. पता है ये 1 लेगा, ये 0 पे 1 लेगा, 180 पे -1 लेगा, 90 पे 0 लेगा, 180 से 0 जाओ, it will take every value from -1 to 1. पता है सबको, है ना? Now because cos theta lies between -1 and 1, तुम ही बताओ cos theta को अगर मैं AB से मल्टीप्लाई करूंगा, wouldn't AB into cos theta lie between AB into 1 and AB into -1? सही है क्या बात, है ना? तो इससे क्या दिख रहा है, AB cos theta lies between -AB and +AB. यानी कि अपना डॉट प्रोडक्ट, आई डोंट नो इफ द डॉट इज ऑलवेज विजिबल, है ना? if it's not visible, let me know. The dot product lies between -AB and +AB. The dot product का extreme values lies between -AB and +AB. तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है, जब वेक्टर्स पैरेलल है. और डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब है? Yes, very nice. Minimum है when vectors are anti-parallel or when the vectors are opposite, when theta is 180. Yes. Okay. AB is not equal to 1. ये प्लीज ये समझो ठीक से, ये इक्वेशन यूनिवर्सली ट्रू है. इस इक्वेशन को AB से मल्टीप्लाई करो, हर टर्म को AB से मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें ये इक्वेशन दिखेगा. समझ में आया? इसके सामने इधर AB डाल दो तो AB अगर cos थीटा का मैक्स वैल्यू 1 है तो AB cos थीटा का मैक्स वैल्यू AB हो जाता है. Got it? A and B are not changing, only the angle is changing. As you change the angle, max value of this can be when cos theta is 1, so AB. And as you change the angle, minimum value of this will be when cos theta is -1, so minus AB. है ना? Clear है? You've done tougher things in calculus, I guess. Max और min इसका दिक्कत नहीं आना चाहिए ना. AB cos theta, AB cos theta का max value is AB into 1 because cos theta का max is 1. AB cos theta का minimum value is AB into -1 because cos theta का minimum value is -1. Clear है अभी? Okay. Let me know whoever asked doubts whether you got it cleared or whether you're still a little confused. Let me know. Okay. But now point 8. So we talked about parallel and anti-parallel vectors. Point 8 is one of the most important points. It's an obvious point. You guys already told me this. It's an obvious point, but it's important because it has a lot of applications. So this is the most important point. Dot product between two perpendicular vectors will be 0. Dot product of two perpendicular vectors will be 0. A dot B
in that case will be AB cos 90. Everyone knows cos 90 is 0. So dot product of two perpendicular vectors is 0. That's it. Remember that point. Both applications होंगे. ठीक है? Dot product 0 है तो vectors perpendicular है. Vectors perpendicular है तो dot product 0 है. It goes both ways. Dot product 0 है तो vectors perpendicular है. Vectors perpendicular है तो dot product 0. ठीक है, 4 ही लाइन है, जल्दी लिख दो. Any doubt in this? Clear? कुछ doubt नहीं? Let me know if I'm changing slides too fast. Let me know. All right, when theta is acute. Okay, again, now this is just for your information. When theta, so that you can visualize कब positive होता है, कब negative होता है. All right. So when theta is acute, cos of an acute angle is positive. Right? Cos in the first quadrant is positive. Cos of an acute angle is positive. तो dot product भी क्या होगा? Remember, magnitudes are always positive. तो ये तो अपने आप में positive है. उसके ऊपर cos theta भी positive है. तो positive into positive, ये positive ही रहेगा. So when theta is acute, our dot product is positive. And when theta is obtuse angle 190 से ज्यादा, जब theta obtuse रहेगा, तब cos theta negative रहेगा. I hope you know in the second quadrant only sign is positive, cos is negative. So in the second quadrant cos negative होगा, तो डॉट प्रोडक्ट जो है ए बी cos theta, ए बी पॉजिटिव है पर cos theta नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया. तो therefore डॉट प्रोडक्ट फॉर ऑब्ट्यूज एंगल्स विल बी नेगेटिव. ओके, तो उसके नीचे मैंने ये क्या कलर्ड क्या बनाया, मैंने एक समरी बनाया. ओके, जैसे अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें बेसिकली मैंने वेक्टर ए बार ड्रॉ किया है and I'm drawing different positions of B bar in different colors. Okay, so the first position I'm drawing is a parallel B bar. The parallel B bar के लिए dot product is A into B, just as a matter of summary. फिर अगला मैंने red B bar draw किया है. Red B bar is making an acute angle with A bar. So because of that acute angle, this dot product lies somewhere between AB तो max value है, and 0 because we know this is positive. Okay, जैसे पहले ये बता देता हूँ, परपेंडिकुलर बी बार के लिए 0 आ रहा है एंड पैरेलल बी बार के लिए ए बी आ रहा है, तो इसके बीच में जो भी होगा ना, उस बी बार के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 और ए बी के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव रहेगा और ए बी से कम रहेगा, 0 और ए बी के बीच में लाई करेगा. वैसे ही यहाँ पे देख लो, अगर बी बार ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो माइनस ए बी डॉट प्रोडक्ट आएगा, परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा, और ऑब्ट्यूज है तो 0 और माइनस ए बी के बीच में आएगा. सीधी सी बात है ना. So as I start rotating B, what is really happening is as I rotate B, the dot product starts from AB, it decreases and becomes 0. उसके बाद it becomes negative and keeps decreasing and becomes minus AB. ये चल रहा है. So as I go from an angle of 0 to 180, cos theta is going from 1 to minus 1, and वैसे ही dot product is going from AB to minus AB. Simple है? Huh? Whenever अब इससे at least when you see the value of a dot product, तुम्हें at least इतना समझ में आना चाहिए कि अच्छा एंगल acute है या obtuse है, या 0 मतलब परपेंडिकुलर है.
पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, उतना थोड़ा वैल्यू देख के समझ में आना चाहिए. Let me know if you're done with this page. कोई वेट बोल रहा है? बोल रहा है तो बोल, डरो मत. वन लास्ट टाइम. अच्छा, ये डायग्राम कुछ नहीं है यार, मैं ए बार मैंने फिक्स रखा है. आई एम ड्रॉइंग डिफरेंट पोजिशन ऑफ बी बार. तो मैं बता रहा हूँ कि जब बी बार पैरेलल है तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ए बी हो रहा है. जो डॉट प्रोडक्ट मैंने ब्रैकेट में ड्रॉ किया है. जब बी बार परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 है. वो येलो वाले से ड्रॉ किया. फिर ब्लू वाले से, डार्क ब्लू से दिखा रहा हूँ, जब बी बार एंटी पैरेलल है तब डॉट प्रोडक्ट माइनस ए बी है. फिर ये बताया लाइट ब्लू से कि जब बी बार ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है ए के साथ तब डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा है मैंने, लाइंस बिटवीन माइनस ए बी एंड 0, इसके और उसके बीच में लाई करता है ना. नेगेटिव है उतना बोला हमने, नेगेटिव है और माइनस ए बी से ज्यादा है. इट वोंट क्रॉस माइनस ए बी. माइनस ए बी इज द एक्सट्रीम वैल्यू. माइनस ए बी और 0 के बीच में. और जब अक्यूट है तो 0 और ए बी के बीच में. लाइक अक्यूट है तो पॉजिटिव है एंड डेफिनेटली ए बी से ज्यादा नहीं है. ए बी इज द एक्सट्रीम वैल्यू. क्लियर है? The diagram is just showing that. It's just summarizing the last 5 points. And yes, dot product, as you can clearly see, can be positive, can be negative. Positive होगा acute angles के लिए, negative होगा obtuse angles. Okay. Point 11, simple one. So cost, one of you saying what will be AB cos 270? So you won't get those values. Cos 270 का भी value 0 होता है. Yeah, that's a different thing. But यहाँ पे when we are using this formula, है ना, we are talking about the formula involves the angle between the vectors. An angle between the vectors is always a smaller angle. So theta itself is going to go from 0 to 180. ये अलग बात है कि वो बड़ा एंगल का भी cos exactly same होता है. Okay, but you don't need to think of that. You have to always pick the smaller angle. Okay? By default, in all these formulas, theta is the smaller angle. That's what you have to pick. Okay. So instead of जो सिनारियो में 270 बोल रहे हैं वो एक्चुअली वो 90 होगा. Cos 90 यूज होगा. Okay, the dot product of a vector with itself is the square of its magnitude. Vector with itself, ये term. Okay, this is just a special case of the parallel thing. So a bar dot a bar खुद के साथ dot product is going to be a into cos 0. खुद के साथ angle क्या बनाता है? 0 बनाता है ना. The vector is parallel to itself. So cos 0 is 1. So you get a ka square. The dot product of a vector with itself gives the square of its magnitude. Okay. Yes, Girish. Yes. Yes. The dot product of a vector with itself gives the square of its magnitude. एक ही बात है, दोनों सिंबल से represent किया. Okay. Copy कर लो. Dot product of a vector with itself gives the square of, not the vector, square of the magnitude of the vector. Okay. So copy this. While those are still copying this, um, the others who are done, can you tell me what this will give me? What will ICAP dot ICAP give me? Good. Yeah, vector is parallel to itself. What will it give? Everyone is answering the square of its magnitude. I'm so happy nobody said I square. कितने क्लास में यार पूछता हूँ बच्चे I square बोलते हैं बिना ठीक से समझ के.
I cap dot I cap will give the square of the magnitude of I cap. What is the magnitude of I cap? 1. So it'll give me 1. Okay, which I've written on the next page. So, all right, so now we're going to move to those unit vectors, and we'll see the dot product of this unit vector with itself is going to give me magnitude of I cap, cos of 0, because the vector is parallel to itself. Cos of 0 is 1. Magnitude of I cap is also 1. वही हो गया definition of unit vector कि उसका magnitude 1 होगा. So 1 into 1 into 1. ठीक है, I cap dot I cap is going to be 1. Quite simple. And this is not just true for I cap. Any unit vector का dot product with itself will give the square of its magnitude. But it's a unit vector. उसका magnitude 1 होता है. So dot product of a unit vector with itself will give you 1 square. It's basically 1. All right. So I cap dot I cap is 1. J cap dot J cap is 1. K cap dot K cap is 1. Now that's important. उससे हम और क्या कर सकते हैं? I dot J, because these are perpendicular. Yeah. So now I'm referring to, now again I'm just working with I, J and K. I, J and K are all mutually perpendicular, मतलब आपस में perpendicular. तो उन वेक्टर्स को है ना, I, J और K में से 2 अलग वेक्टर अगर लोगे और उनका डॉट प्रोडक्ट लेने जाओगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा. Why? Because they are perpendicular. That's the bottom line. I dot J करने जाओगे तो I and J, X and Y axis are perpendicular. तो cos 90 के कारण 0 आएगा. So if you take any two of these 3 vectors, ऐसा कोई भी random unit vector नहीं, but if you take any 2 different vectors from these 3, which we know are mutually perpendicular, and you try to find that dot product, you'll always get 0. So bottom line, I dot J या J dot K या K dot I या कोई भी उल्टा ऑर्डर में I dot K, कोई भी ऑर्डर में लिखो, टेकिंग I J K में से 2 अलग वेक्टर लोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, because you know they are perpendicular. So 12 and 13 are, yes Girish, 12 and 13 are fairly simple. With this, we now can almost see how to take the dot product of 2 vectors. Okay? इससे अब almost काम हो गया, अब डॉट प्रोडक्ट लेने को तैयार है. Let me know when you're done with this page. Yeah, can I, sorry, what does 2 mean? What does 2 mean? What is 2? कहाँ पे है 2? Can I explain 12 again? 12 यार simple है, इनको आपस में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो फॉर्मूला है I cap का मैग्नीट्यूड cos of the angle it makes with itself. The angle it makes with itself is 0, right? So cos 0 is 1, I cap is 1, I cap का magnitude is 1. You have 1 into 1 into 1. So with this I've just said ki I dot I, J dot J, K dot K, all of them are 1. Okay. Yes, Smriti Rupa, yes. Yes, yes. All right, तो अब देखो, now I'm showing you an example. ठीक है, तो इसमें what will happen when I take the dot product of 2 vectors in coordinate form? फिलहाल मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा था सब कुछ पोलर फॉर्म में था, है ना. इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे आई थिंक द वैल्यूज वर 4 and 3.
and there was some angle, 60 degree का angle था, 120 का angle था. So if I give you in polar form, it's very easy. क्यों? बस magnitude into cos theta करना है. But यहाँ पे मैं coordinate form में दे रहा हूँ, and it may look difficult at first, but then you'll pretty soon see कि क्या है, एक simple सा trick है, and this also becomes very easy. तो मान लो मुझे ऐसे दो वेक्टर दिए गए हैं, they have their I cap and J cap and K cap components, और इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेने जाएंगे, ओके, सो A डॉट B जब करने जाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा. The what we have learned is when you try to take this dot product and you have these brackets, you can open up the brackets. So when we open up the brackets, yes, Girish, as the end result. When we open up these brackets, you will want to multiply each term in the first bracket with each term in the second bracket. So ax into bx I cap dot I cap ऐसा एक term आएगा. ax into by I cap dot j cap ऐसा term आएगा. ax into bz I cap dot k cap ऐसा term आएगा. You can see if you really want to copy all of this or you just want to understand. I think it's up to you. But ax into bx I cap dot I cap आएगा. ax into by I dot j आएगा. ax into bz I dot k आएगा. ऐसे तीन term आएंगे. फिर अगला रो क्या हो जाएगा, इसको इनके तीन टर्म से मल्टीप्लाई कर लो. तो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे. यहाँ पे मैं स्केलर्स को बाहर लिख रहा हूँ, अंदर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, है ना. रिमेंबर दिस इज दैट पॉइंट व्हिच आई मेंशन्ड, यू कैन टेक द स्केलर्स आउट. ए वाई बी जेड बाहर लिख रहा हूँ, जे डॉट के कर रहा हूँ, ठीक है. सो स्केलर्स को बाहर लिख रहा हूँ और फिर डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ. तो ये हो गया सेकेंड रो. वैसे ही थर्ड रो क्या हो जाएगा, ए जेड इंटू दीज टर्म्स. तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के. तो आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे जो लाइट ब्लू में बड़ा सा चीज लिखा है, दैट इज एक्चुअली जस्ट मी ओपनिंग अप द ब्रैकेट्स. ठीक है, ऐसा प्रॉपर्ली रोबोट की तरह वी ओपन द ब्रैकेट्स. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग ओवर हियर इज you will find that most of these terms are zero. In fact, there are 9 terms, 3 into 3, 9 terms. 9 में से 6 terms are zero. Look carefully. I dot j, I dot k, unlike terms जो है ना, ये जीरो हो रहे हैं. I dot j, I dot k. फिर नेक्स्ट रो में j dot i, j dot k, k dot i, k dot j. All these terms, 6 terms are becoming zero. 6 terms are disappearing. You don't need to worry about them. What terms are really left? Only when I multiply I with I, that gives me 1. So I dot I is 1. So ax into bx as a number is left. Okay. फिर j dot j is 1. तो ay into by as a number is left. और ये वाला भी कौन सा, az into bz, k dot k is 1. az into bz as a number is left. So if you look at the final result, अब final result ही important है. ये जैसे मैंने लाइट ब्लू में कुछ लिखा, you will never do that again while solving. Final result क्या है, this into this plus this into this plus this into this. कितना easy है. ax bx ay by az bz सबको ऐड कर लो, बहुत easy है. So just multiply the corresponding terms and add them up. Notice there is no I j k over here. कुछ लोग multiply करके इधर I लिखते हैं, इधर j. ऐसा मत करो, कुछ है नहीं. This is now the dot product is a scalar. ax bx ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है. उन तीन नंबर को ऐड कर लो तो एक नंबर रह जाएगा अंत में. That is your dot product. Okay, it's very easy. I know I'm almost out of time, but maybe if I can just give you one example, I'll come back to this page. जैसे एक हाँ, ये example कर लो जल्दी. You'll see how easy it is. Then I'll go back to that page. Solution भी एक लाइन का ही होता है इसमें. एक एग्जांपल कर लो just to, है ना. अब don't open the brackets, and that blue thing was just to prove कि, है ना, ultimately dot product is product of the corresponding terms.
Yes, कायनात सही है, गिरीश सही है, स्मृति रूपा सही है, भव्य सही है. Please keep the minus signs. One of you has gotten rid of the minus signs. Don't do that. Okay. So one of you has, while multiplying these two, yeah, all those getting, I mean, all of you are right. Almost all of you are right. One of you has multiplied this and then place the mod. I didn't ask you to place a mod. I didn't keep the minus sign. Keep the minus sign. Minus 3 j cap and 3 j cap ka dot product minus 9 hoga. Those numbers, allow them to be positive or negative according to whatever you get. Don't change that sign. And what another one of you has done is you have gotten the right terms, but then you missed what I said. You have kept the j cap, I cap, and all. I said that ijk disappears. If you go back to the previous page, you'll see कि एक term था, ये जो 2 वाला term था ना, that was 2 I cap dot I cap. I cap dot I cap is 1. No longer do you see any I over here. So final answer में I J K नहीं दिखेगा. I cap dot I cap is 1. I cap disappears. J cap dot J cap is 1. You're left with just numbers. You're left with 2. Okay, so all those who have answered minus 15, you're correct. You're left with 2 into 1 plus, इनको properly multiply कर लो, minus 3 into 3. Okay, that's 9. Minus 9, sorry. And then 2 into minus 4, that's minus 8. Add these up. Add these three numbers up. So 2 minus 9 minus 8. Okay, 2 minus 9 minus 8. That will give you minus 15. It's that simple. Orally कर सकते हो dot product. Orally कर सकते हो. Okay? देख लिया कितना easy है. Yeah, I'll send you homework. In fact, I see that tomorrow you guys are a little bit free. So maybe I'm thinking of taking a 1-hour lecture tomorrow. Because right now we just finished the theory of dot product. In a 1 hour, maybe I can teach a little bit more so I can give you more homework on dot product. So just 1 hour, maybe around, let me see when my lecture gets over. 1 minute, I'll just confirm. 1 minute. Yeah, don't worry, I also don't want to take too much of your holiday. Yeah, so I think 12 to 1, that's okay. Take strictly 1 hour so I can do some applications of dot product. And with that, then you can have some, some homework to do over the weekend. You can see the applications and everything. Cool. मिलते हैं फिर कल 12 to 1. ये पेज किसी को कॉपी करना था तो देख लो. या illustration 6. Okay, let me just see illustration 6. Come the page with example देखना है. अच्छा, एक मिनट. illustration 6 photo. Okay, I'll show you that.
done with this page, whoever. एक minute. Yes, Girish, you can just message me, I'll reply. Just ping me and let me know. Yeah. Medical module. Yes, those are, yes, you can leave, please, you can leave. Just answering one doubt for one student. हाँ, इसमें क्या किया है, इसमें this thing substituting theta equal to 150 degrees. यार ये actually ज़्यादा, ठीक है, I'll show you what they have done. Honestly, I mean, you won't have that much of maths in what do you say, in your NEET, है ना? इतना लंबा solution, इतना लंबा question you'll never have a NEET. So this is actually for NEET, this becomes a very long solution as such. But I'll just show you what he has done in the last step. So he said he has substituted cos, he has substituted theta as 150. So cos 150 we know is minus root 3 by 2. ठीक है? And फिर उसको उसने स्क्वायर किया है. तो अब स्क्वायर करने के बाद सीन ऐसा दिखेगा. cos 150 डालने के बाद ये ऐसा दिखेगा. इनफैक्ट ये 2 हटके ये रूट 3 हो जाएगा. एंड सिमिलरली नीचे हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर. इधर प्लस था बट cos 150 के कारण माइनस साइन आ गया. ओके, यहाँ तक ये फॉलोड इक्वल टू 4. ये तो स्क्वायर किया उसने. ओके, फिर इसने क्या किया होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा. ठीक है, यू टेक दिस टू द अदर साइड and then bring all terms to one side. So if you see that, what you'll get is, if I take f1 square over here, I'll get 4f1 square minus f1 square as 3f1 square. Agreed? 4f2 square minus f2 square as 3f2 square. And the last one, minus 4f1 f2 root 3. Okay, plus f1 f2, नहीं प्लस की जगह वो माइनस हो जाएगा. minus 5 minus 5 f1 f2 root 3. यहाँ तक फॉलो किया? ऐसा इक्वेशन आ रहा है. So how do you treat this as a quadratic equation? Basically what you have to do is, इसमें simple, थोड़ा सा simple सा trick है. क्या है कि this may not look like a quadratic equation like this, but if you divide both sides by f2 square, it suddenly becomes a quadratic equation. And these are small tricks students learn in maths. But can you see how it makes sense? f2 square से divide करेंगे तो पहला टर्म तो f1 square by f2 square हो जाएगा. फिर ये टर्म लिख रहा हूँ, इसको जब f2 square से divide करेंगे तो एक f2 कटेगा और एक f2 नीचे रह जाएगा. So this becomes minus 5 root 3 f1 by f2. And then the last one plus 3 f2 square by f2 square. Okay, so you get this, and now this is a quadratic equation in terms of f1 by f2.
है ना? This is playing the role of x, and so the formula will be x is equal to, what is my formula? Minus b. So minus of this guy minus b, matlab 5√3 plus minus root b square. So 25 into 3, 75 minus 4ac. A is 3 and c is also 3. So minus 4 into 3 into 3. I think that's 4 into 9, 30, minus 36 upon 2a. So upon 2a upon 2 into 3, 6. ऐसा आ जाएगा. Okay. So I mean, the idea over here is, I mean, you will not get this in NEET because question ठीक है, मतलब eventually solve हो रहा है, but NEET has 45 questions, 45 minutes. Of course, you'll get more time given कि botany, zoology, and chemistry will take less time. They're theoretical, but NEET knows my question has to be 1 minute long. Yeah, you'll never get a question like this in NEET. But it's good to know. अच्छा ऐसा इतना तक solve किया तो मतलब you should at least know. अच्छा next step क्या करना है? अच्छा इसको इससे divide करके मतलब एक f1 by f2 में quadratic बन सकता है. वो that उतना you should be able to understand. Okay, good. इसमें I think they might have neglected the negative root. Okay. Welcome. Yeah, they've kept the root. Yeah. Sorry. Welcome. Bye.